स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडवांस एक्सेल ट्रिक्स में। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ टू चेंज द डिफॉल्ट फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज इन MS एक्सेल। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि MS एक्सेल में हम फॉन्ट जो डिफॉल्ट है बाय डिफॉल्ट एंड फॉन्ट साइज को कैसे चेंज करें। सो आप देखोगे एक ब्लैंक शीट है हमारे सामने, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। से लाइक एग्जांपल माय नेम इज लखन। गॉट इट? See this I have written. Now there is some specific font given by the MS Excel and font size also that will we can like change from here कि अगर हमें थोड़ा बड़ा इसको font size को बड़ा करना है say like this, or if we'll have to change the font so we can do this. but अगर हम इसको permanently change करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि मैं आज आप लोग को इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूं। So this is called the data ribbon. You all might be knowing this. आप इस पूरे डेटा रिबन में कहीं पे भी राइट क्लिक दे सकते हो, तो आपको कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन आ जाएगा। यू कैन क्लिक ऑन दिस कस्टमाइज द रिबन ऑप्शन एंड यूल हैव टू गो टू सेलेक्ट दिस जनरल। ठीक है, एक सेकेंड के लिए अगर हम इसको बंद करते हैं, सो यू कैन गो ऑन द फाइल ऑप्शन। ओके, फाइल ऑप्शन पे जाने पे जब हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सेम वही ऑप्शन आता है। से for example I am going on the file option and clicking on this options, सेम वही फॉर्मूला आ जाता है। अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी चीजें मैं आप लोग को आगे के वीडियोस में बताऊंगा। अभी जो हम लोग फोकस कर रहे हैं, हमारा एजेंडा जो है फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज, तो विल हैव टू कम हियर व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक यूज दिस एज अ डिफॉल्ट फॉन्ट। अभी आप देखोगे इसमें रॉकवेल नोवा सिलेक्टेड है। Rockwell Nova, you can select it to anything. Say for example, body font, Abadi, or all these options. Aptos, I'm selecting Aptos. Now font size, you can change it to like as per your convenience. Default view for the new sheet, should it be the page break preview? Page break you can understand like this, page will be broken into different kind of pages. So on a single screen you will be able to see the different kind of pages like this, or page layout view. So page layout view will give you another different angle for the layouts. Okay, include this many sheet. See, this is sheet 1. If I'm opening a new Excel, so I'm getting only one. You can change it to anything, whatever you want. If you want to get, say for example, 4 sheets, you can select it to 4 and you can click on here. Okay, now see what is going to happen is it it's a prompt that is asking that please close and restart the Microsoft Excel so that the font changes can take effect. Okay, just click on OK. And now what I'll have to do, I'll have to close this and I'll have to restart it again. Okay, I'm restarting the same file again, and it is taking time. But since I'm using 365 and this is very bulky, what you can say, having a, it covers more space. So once I'll open this, so all the thing what I have selected, that will come into the picture, and that is very good for you. Okay, now see, I'm just clicking here, and since I have changed this font, now again I'm going to write my name is Lakan. See, the font size is really changed. Coming on to the back, again I'll have to click on the ribbon and we can justify this. I have selected Aptos. You can select it to anything. Say for example headline font. I have selected it normal view, not page breakup view. So by doing this, I'll have to close this Excel and restart this. So you will be getting this.
So thank you so much for liking this. If you are new onto the channel, kindly subscribe so you can get the notification of the new videos posted here. Keep in touch with the channel and with the videos to get all the advanced Excel tricks which can help to boost your productivity for your daily work. And I'll request each and everyone to keep it in a practice to make yourself even more productive. So be productive and be awesome. Thank you so much.